The present tense in English is used to describe actions happening now, habitual actions, general truths, and future events. There are several forms of the present tense, and each has its own structure and usage. Here's a detailed look at the different forms. अंग्रेजी में वर्तमान काल का उपयोग वर्तमान में होने वाली क्रियाओं, आदतन क्रियाओं, सामान्य सत्यों और भविष्य की घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। वर्तमान काल के कई रूप हैं और प्रत्येक की अपनी संरचना और उपयोग हैं। यहाँ विभिन्न रूपों पर एक विस्तृत नज़र डाली गई है। First is simple present tense. The simple present tense is used to describe regular or habitual actions, नियमित या आदतन क्रियाएं, general truths, सामान्य सत्य, facts, तथ्य, timeless events or things that are always true, कालातीत घटनाएं या बातें जो हमेशा सत्य होती हैं। Structure, affirmative, subject plus base verb or base verb plus s or as for third person singular. Example, she reads books every evening. वो हर शाम किताबें पढ़ती हैं। Negative, subject plus do, does plus not plus base verb. Example, I do not like coffee. मुझे कॉफी पसंद नहीं है। Interrogative, do, does plus subject plus base verb. Example, do you play soccer? क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? Examples, I work every day. मेरा प्रतिदिन काम होता है। He speaks 3 languages. वो 3 भाषाएं बोलता है। The sun rises in the east. सूरज पूर्व में उगता है। Second is present continuous tense, progressive. The present continuous tense is used to describe actions happening at the moment of speaking. बोलते समय होने वाली क्रियाएं। Temporary actions, अस्थायी कार्रवाई, ongoing or changing situations, चल रही या बदलती परिस्थितियां। Structure, affirmative, subject plus am, is plus base verb plus ing. Example, she is reading a book. वो किताब पढ़ रही है। Negative, subject plus am, is plus not plus base verb plus ing. Example, they are not playing outside. वे बाहर नहीं खेल रहे हैं। Interrogative, am, is plus subject plus base verb plus ing. Example, are you studying for the test? क्या आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? Examples, I am working right now. अभी मैं काम कर रहा हूँ। She is eating lunch. वो दोपहर का खाना खा रही है। We are watching a movie. हम फिल्म देख रहे हैं। Third is present perfect tense. The present perfect tense is used to describe actions that started in the past but have relevance or effects in the present. वे कार्य जो अतीत में शुरू हुए थे लेकिन वर्तमान में प्रासंगिक हैं या जिनका प्रभाव है। Experiences that occurred at an unspecified time in the past. अतीत में अनिर्दिष्ट समय पर घटित अनुभव। Actions that have been completed at some point before now. वे कार्य जो पहले किसी समय पूरे हो चुके हों। Structure, affirmative, subject plus has, have plus past participle. Example, they have finished their homework. उन्होंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। Negative, subject plus has, have plus not plus past participle. Example, she has not visited that museum. वो उस संग्रहालय में नहीं गई है। Interrogative, has, have plus subject plus past participle. Example, have you seen that movie? क्या आपने वो फिल्म देखी है? Examples, I have eaten breakfast. मैंने नाश्ता खा लिया है। They have lived in this city for 5 years. वे इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं। He has never been to Paris. वो कभी पेरिस नहीं गया। Fourth is present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to describe actions that started in the past and are still continuing or have recently stopped. वे कार्य जो अतीत में शुरू हुए थे और अभी भी जारी हैं या हाल ही में बंद हुए हैं। The duration of an action that has just been completed. किसी कार्य की अवधि जो अभी पूरी हुई है। Emphasis on the activity rather than the result. परिणाम के बजाय गतिविधि पर जोर दे। Structure, affirmative, subject plus has, have plus been plus base verb plus ing. Example, she has been working all day. वो पूरे दिन काम करती रही हैं। Negative, subject plus has, have plus not plus been plus base verb plus ing. Example, they have not been sleeping well. वे ठीक से सो नहीं रहे हैं। Interrogative, has, have plus subject plus been plus base verb plus ing. Example, have you been waiting long? क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं?
Examples. I have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. We have been living here since January. हम जनवरी से यहाँ रह रहे हैं. He has been working on the project all week. वो पूरे सप्ताह इस परियोजना पर काम कर रहा है. Summary of the forms. Simple present. Affirmative. Subject plus base verb, S. S for third person singular. Negative. Subject plus do, does plus not plus base verb. Interrogative. Do, does plus subject plus base verb. Present continuous. Affirmative. Subject plus am, are, is plus base verb plus ing. Negative. Subject plus am, are, is plus not plus base verb plus ing. Interrogative. Am, are, is plus subject plus base verb plus ing. Present perfect. Affirmative. Subject plus has, have plus past participle. Negative. Subject plus has, have plus not plus past participle. Interrogative. Has, have plus subject plus past participle. Present perfect continuous. Affirmative. Subject plus has, have plus been plus base verb plus ing. Negative. Subject plus has, have plus not plus been plus base verb plus ing. Interrogative. Has, have plus subject plus been plus base verb plus ing. Each of these forms helps convey a different sense of time and aspect in relation to actions in the present.